start. It is further observed as follows stop. The point of jurisdiction is really concluded by the decision of the Supreme Court in Lipton Limited versus their employees 1959 LLJ 431 White Supra, where it has been ruled that the government of the state within which one of the offices of a company is situated is the appropriate government for referring any dispute between that company and its workmen who are paid their salary and controlled by that office, irrespective of the fact that these workers work at a place which is outside the limits of that state stop. On this principle laid down by the Supreme Court in Lipton Limited versus their employees, the Maharashtra government was undoubtedly the appropriate government for referring the dispute under Section 10. Stop. In the present case, it is to be noticed that the respondent workman has not worked in any establishment with the Union Territory Chandigarh even for a single day stop. In fact, it is nowhere pleaded that the petitioner has any establishment within the Union Territory Chandigarh stop. Thus, it cannot be said that the parties reside within the jurisdiction of the Union Territory Chandigarh of the subject matter of the dispute substantially arose in Chandigarh stop. Similar view has been taken by a division bench of the Kerala High Court in the case of J and J stop. D distributors versus state of Kerala and others stop. After considering the principles of law set out by Chagla CJ in Lal Bhai case Supra and the Supreme Court cases mentioned above, the division bench held as follows stop. It would not appear that although on the general principles regarding the jurisdiction of courts to take cognizance of suits embodied in Section 20 of the Civil Procedure Code, it is enough to show that the cause of action wholly or in part arose within the jurisdiction of the court for the purpose of referring an industrial dispute. It is necessary to show that the dispute substantially arose within the cognizance of the appropriate government empowered to make the reference stop, and the test of residence or of carrying on business or personally working for gain formulated with reference to the defendant under Section 20 of the CPC is stated by Chagla CJ differently as the residence of the parties and not the defendant alone stop. Going by the test propounded by the Supreme Court, could it be said on the facts of this case that the cause of action substantially arose within the frontiers of this state so as to empower the Kerala government to make a reference stop? Counsel for the respondent could rely only on two facts, namely that the orders of termination was served in Quilon within the state and that the third respondent himself was carrying on business of the petitioner in the Kerala state with Quilon as his headquarters stop. But there is nothing to show that the petitioner was having either a branch office or an establishment in
Quilon or elsewhere in this state. Stop. The third respondent was only a representative who used occasionally to be sent out for promoting sales of the petitioner's products. Stop. We are unable to hold that the petitioner could be said to be carrying on business within the state. Stop. Hi student. डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है। आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है, ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।